welcome back to my channel. Now hope you people are safe and doing great. So first of all, I would like to say happy Diwali to everyone. So in this video I've created this simple yet elegant makeup tutorial without the use of any kind of foundation. Festive makeup look without any foundation. So if you're first time on my channel, so make sure to subscribe, and now without any further ado, let's get started. So I'll begin my makeup with the primer. So this primer is from NY Bay. I'm gonna use it all over my face to minimize my pores. And then I'm gonna use this BB cream. This is from Sugar in the shade 47 Borgia Medium Tan. I'm gonna use it all over my face dot करके, and then also मैं इसको use करने वाली हूँ मेरे neck पे. So I'm using a brush to blend my foundation. You can use a brush or either a beauty blender, whatever you prefer. So now I'll be using concealer on my eyelids, and then I'm gonna just blend it out with this brush so that the eye makeups, whatever I do, gets popped up. And after that I'm gonna use compact powder, and this is from Faces Canada, and the shade number I'll mention on the screen. I'll apply it all over my face so that there are no creases on my face and my base looks flawless. So now I'm using your lip and cheek tint. ये मैंने Instagram के कोई स्टोर से खरीदा था. अगर आपको चाहिए ये, so I'll mention the IG handle in the description box. So मैंने इसको mix किया with some concealer, and then I'll apply it all over my cheeks and on my nose. So I'm using here a lot of blush because you guys know how much I love blushes. And अगर आप इसको mix करोगे with some concealer, so बहुत एक beautiful सा natural shade आने वाला है which looks just stunning. So एक बार इसको ज़रूर try करना. So the eyeshadow palette which I'm using today is from Hieee Hoda. So I'll be using this shade. Now this is deep maroon kind of pinkish shade. मुझे नहीं पता इसको कैसे describe करूँ, आप देख लेना. So इसको मैं use कर रही हूँ as a transition shade, and then मैंने इसको quickly blend कर लिया. So आप देख सकते हो. एंड अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला शेड, न्यूड शेड. इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरे आईलिड्स पे नीचे वाली साइड में, एंड देन मैंने इसको भी ब्लेंड कर लिया. एंड देन उसके बाद मैं यूज़ करी हुई ग्लिटरी थोड़ा बहुत शिमरी पिंक शेड. इसको आई यूज़ इसके टॉप ऑफ दिस, एंड लुक्स जस्ट सो ब्यूटीफुल you guys. So for my eyeliner today, I'm not gonna use any kind of black eyeliner. I'll use simply a lipstick. Yes, मैं use कर रही हूँ lipstick को as a eyeliner, and it looks just so beautiful. मैंने एक hack video बनाया था, इस पर आप देखना वो ज़रूर, मैं इसकी लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. So मैंने इसको अप्लाई किया as a eyeliner with this brush, and then I'm gonna use ये mascara. So this is from Blue Heaven. मैंने इसके 2-3 कोट्स लगा ली. एंड उसके बाद में I'm using here काजल. नाउ दिस इज़ फ्रॉम शुगर. इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइक मेरे सिर्फ कॉर्नर पे, आप देख सकते हो, एंड बहुत अच्छा लग रहा था ये अप्लाई करने के बाद में. So I'm using here the highlighter which is from Sugar again. So मैं इसको यूज़ करी हूँ on my cheekbones, on my bridge of my nose, chin. दिवाली है एंड मैं हाईलाइटर नहीं लगाऊँ? No, that's not possible. So I'm using here the lipstick which is from Sugar in the shade 03 Tan Fan. बहुत beautiful shade है ये, मेरी ड्रेस से एकदम मैच करता हुआ है. This is a kind of गाजरी shade बोल सकते हो आप इसको, and बहुत stunning लगता है ये. So you can see looks so beautiful. So now I'm done with my makeup. I wore these jhumkis and this necklace because now I didn't have any other necklace. तो मैंने butterfly वाला necklace पहना, बिंदी लगाई, and yeah, that was it. Okay, bye.